Hi, welcome to all viewers. I am Chittaranjan Das. Let us study about the physical property of haloalkane and haloarine. Okay, we have already discussed about the preparation of haloalkane and haloarine. How can you prepare haloalkane from alcohol, from alkane, from alkene, from silver salt of carboxylic acid, exchange of halides, and like the haloarine, like hydrocarbon from toluene from BDC. So it is clearly discussed in previous chapters. So today we read about the physical property of haloalkane and haloarine. ओके आम मैंने क्लीयरली पढ़ी देचु केमिति प्रिपेरेसन करिबो तार क्लासिफिकेशन कौन ये सब बाबद क्लीयरली पढ़ाई. ओके जदि भी देखी ना हो तबे तुम लास्ट वीडियो तुम देखिपार डिस्क्रिप्शन बा प्लेलिस्ट अच्छी तुम देखिपार. देन हूँ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ haloalkane and haloarine. Then question arises, what do you mean by physical? What is the physical property? How physical property changes in during the different compound of haloalkane and haloarine? Physical means the outermost property. Mainly when you read in every chapter, you read about the फिजिकल प्रॉपर्टी. तमें सबू चैप्टर रे फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़िबो. haloalkane रे पढ़िबो, haloarine रे पढ़िबो कि अल्कोहल रे पढ़िबो, फिनोल रे पढ़िबो, इथर रे पढ़िबो, कार्बोक्सिलिक एसिड रे सबू चैप्टर रे मैं फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़िबू. तो फिजिकल प्रॉपर्टी कहले को प्रॉपर्टी को हमें फिजिकल प्रॉपर्टी बुझिबू. फिजिकल प्रॉपर्टी कहले हमें को प्रॉपर्टी को बुझिबू. दैट इज द मेन थिंग. That is physical property. तो physical property कहले कौन? physical property कहले हमें कहा को बुझिबो. प्रथम कथा हला physical property कहले state of substance. One is state. Either it is solid or liquid or gaseous. ओके जितेबाला भी आम स्टेट कथा कहूँ आम तीन टा कथा थ्री स्टेट ऑफ द मैटर. आइदर इट एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म और गैसियस फॉर्म. ओके देयर आर थ्री स्टेट ऑफ मैटर, आइदर सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म और गैसियस फॉर्म. सेकेंड कलर. Okay, color is also a physical property. Third, odor. Fourth, melting point. Odor means smell. Odor means smell. Melting point or boiling point. Melting point means the temperature at which a solid changes to liquid. When a solid substance changes to liquid, okay, जो temperature रे solid liquid को change होची, the temperature is called, this temperature are called melting point. The temperature at which solid changes to liquid. Boiling point means liquid changes to gas. Liquid changes to gas. Then fifth one is solubility. Fifth one is solubility. Fifth one is solubility. Sixth one is density. Inflammability. Density, mass by volume. Mass by volume. Inflammability or combustibility, that is the opposite words. Inflammability. Eighth one is dipole moment. Dipole moment. Reactive order. Bond length.
bond length, bond energy, etc. Bond length means the distance between the two nuclei of bonded atom. Suppose theta atom missing gote bond formation karichandi, either they may be covalent bond or of any bond, and the average distance between the two nuclei, average distance between the two nuclei are called the bond length, are called bond length. The distance between two nuclei are called bond length, and average distance are called bond radius, and the amount of energy required to break the bond are called bond energy. Okay, these are the physical property. एवढा होतो सब physical property. तो आमर मोटो जे याकू केमिति हालो अल्केन रे एप्लीकेबल सेतिरे केमिति चेंज हे जाउची तार ऑर्डर केमिति सॉल्युबिलिटी ऑर्डर केमिति तार के स्टेट रछन सेमनकर कलर केमिति के सेमनकर स्मेल केमिति का. ओके, तो वी रीड अबाउट द physical property one by one. Okay, तो physical property रे फर्स्ट कहितली स्टेट कथा. physical property रा प्रथम उठला स्टेट मीन इट एग्जिस्ट इन व्हिच स्टेट, या गैसियस स्टेट, या लिक्विड स्टेट, या सॉलिड स्टेट. So before going to discuss about the state of haloalkane halorine, first you know about the van der Waals force या London force. van der Waals force, van der Waals force, van der Waals force. First we discuss about the van der Waals force or London force. Van der Waals force or a London force. When van der Waals force increases, van der Waals force increases, the strength or the molecules are closely packed and they become tighter and tighter. जदि van der Waals force increase हबो, molecule मान increase हबो, molecule माने से माने कौन है पाखो को टाणी आसीबे, attraction बढ़ी जिवो हैला. attraction बढ़िले तो ऑब्वियसली से माने क्लोजली पैक्ड हे जिबे, क्लोजली पैक्ड हेले से माने सॉलिड स्टेट रे रहबे. ओके, व्हेन van der Waals force increases, its state also increase from gaseous to solid. ओके, van der Waals force mean कोन गोटे इंटर एटॉमिक फोर्स, दैट इज द बॉन्ड. बॉन्ड इज आल्सो अट्रैक्टिव फोर्स, van der Waals is also an attractive force. One is bond, another one is van der Waals force. Both are the attractive force, but the bond is the attractive force between the atom in a molecule. गुटे suppose H2O अच्छी तो AH और ऑक्सीजन भीतर जो अट्रैक्शन अच्छी that is bond, that is bond. AOH भीतर जो अच्छी that is bond. But van der Waals force means the attractive force between the molecule and molecule. Suppose ये गुटे वाटर मोलिक्यूल, ये गुटे वाटर मोलिक्यूल. ओके, तो ए वाटर मोलिक्यूल भीतर जे अट्रैक्टिव फोर्स रहला, that is the van der Waals force, that is the van der Waals force, that is the London force, the attractive force between the molecule. van der Waals force means what? Attractive force between the molecule, okay, attractive force between the molecule are called van der Waals force or London force. Okay, when the molecule increases, mean the number of carbon increases, van der Waals force also increases. Number of carbon in a organic compound increases. Number of carbon in organic compound
are directly proportional van der Waal force. Van der Waal force or London force. ये number of carbon atom increases. Suppose methane CH4 या C2H6 या C3H7, when number of carbon increases, the van der Waal force also increases. Suppose in case of alkene CH3Cl, C2H5Cl, C3H7Cl, here is 1 carbon in parent chain, here is 2 carbon in parent chain, here is 3 carbon in parent chain. When the number of carbon in parent chain increases, then the van der Waal increases. When van der Waal increases, van der Waal directly proportional to the attractive force. Attractive force increases. When attractive force increases, they changes or they comes to tightly packed with each other. They come to solid states. So the lower member of haloalkane, this is the most important point of the state. This is the reason, this is the concept, this is the logic behind the how the state you determine whether it in gaseous state or in liquid state. तो ये के स्टेट रो अच्छी जानिया पाई ये तिला हम पाखरे लॉजिक जो लॉजिक रो मेन थिंग्स होची van der Waal force. van der Waal force माने होचो the attractive force between the molecule. जते attractive force between the molecule increase करूची सेते बेले तार स्टेट बा तार अट्रैक्शन बढ़ुची. अट्रैक्शन मतलब टाइटली क्लोज्ड पैक. जते मोलेक्युल क्लोज्ड रहबे सेते तार स्टेट करे जिवो सॉलिड हे जिवो. सेते ताक भीतर स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जिवो. जते van der Waal फोर्स कम रहबो से सेते गैसियस साइड को मूव करबे. गैसियस स्टेट रे रहबे. सो दैट फर्स्ट कथा लोअर member of haloalkane, lower member mean less number of carbon, mean up to C1 to C2, either methyl or ethyl part mean or exist in gaseous state. Okay, जो माने lower member means only carbon either 1 or 2. 1 भितरे पुणी रहउची CH3Cl, CH3F, CH3Br. These are exist in gaseous state. 2 भितरे CH3Cl and CH3F. Only these compound are in gaseous state, and other compound up to other haloalkane up to C18 are in liquid state, mean chlorobutane, chloropropane up to C18 are in liquid state. Then above if when greater than C18 it exists in solid state. Okay, माने C1 रो C2 specially methyl chloride, methyl fluoride, methyl bromide and ethyl chloride and ethyl fluoride are exist in gaseous state. एमान सब gaseous state रहती. या कुछ छाड़ी दियो बाकी जहाँ रोइला up to C18 तक मान C18 पर जो जहाँ भी रोची that is called what? Liquid state. They exist in liquid state and C18 रो अधिक रोइले that exist in solid, that is waxy solid. In waxy solid form रे रोची. हला मोहम बोले waxy solid form रे रोची. Okay, these are about the state, and there is also haloalkane and haloarine. Haloarine mean it exists either liquid or solid form. Okay, there is no haloarine compound exist in gaseous form.
आ भितर कौन सी गैसियस कंपाउंड फॉर्म नहीं है, आइदर लिक्विड फॉर्म और सॉलिड फॉर्म रे अछंती। बुझीला फर्स्ट थिंग जदि लेयर मेंबर आसुची मीन अप टू C1 टू C2 माने आइदर 1 और 2 पुनी C1 भितर आयोडीन नहीं, C1 भितर कौन नहीं आयोडीन नहीं, एतिरे क्लोरीन आयोडीन नहीं, एतिरे केवल क्लोराइड फ्लोराइड ब्रोमाइड मिथाइल क्लोराइड मिथाइल फ्लोराइड मिथाइल ब्रोमाइड मिथाइल क्लोराइड मिथाइल फ्लोराइड आर एग्जिस्ट इन ए gaseous form or gaseous state, other liquid after C18 solid, haloarine either liquid form or solid form. Okay, this is all about the physical state of haloalkane and haloarine. Next we go to color. Okay, color means all the haloalkane and haloarine are colorless in pure form. Okay, haloalkane and haloarine are colorless in pure form. जदि तार प्योर फॉर्म आसुची इन प्योर फॉर्म इट इज कलरलेस, देयर इज नो कलर. haloalkane and haloarine are colorless, but only the alkyl bromide and alkyl iodide. Okay, iodide shows color when it exposed to light. जदि ये लाइट को एक्सपोज होचंती जतबे अल्काइल ब्रोमाइड अल्काइल आयोडाइड गोटे लाइट को एक्सपोज होचंती सेतबे ताको कोन कहउची से कलर फॉर्मेशन करूछ. अदरवाइज इन प्योर फॉर्म इट इज कलरलेस. Okay, then odor, smell, गंध हैला आपको जब हमें सुंगुचो then how can we feel, mean what is its smell, यार smell कौन अच्छी, that is odor. That is the most important things. The organic compound mean the haloalkane and haloarine, means specially haloalkane are not exist in gaseous state. The haloalkane which exist in gaseous state that have the sweet smell, just like the incense stick. गोटे धूप को जालिले जेमती गोटे स्वीट स्मेल आसे घर भीतर सेमती जदि द ऑर्गेनिक मीन द haloalkane which exist in gaseous state, the haloalkane which exist in gaseous state have sweet smell. Okay, have a sweet smell, तार गोटे sweet smell अच्छी. Okay, one is color mean haloalkane are colorless, haloarine also colorless in pure form, but alkyl iodide and alkyl bromide shows the color when it exposed to light. जेता को तमे लाइट रे रखी दउछ से जदि खरा रे रहि जाउछ देन से कलर फॉर्मेशन करूची. ओके, ऑर्डर कथा कहले haloalkane mean which exist in gaseous state, जे gaseous state रे अछि से होछि केवल तुमको कोन दउची sweet smell, and other haloalkane and haloarine do not have any definite smell. तार सेमति किछि definite smell नाही कि ऑर्डर नाही. स्पेशली द haloalkane which exist in gaseous form that have the
sweet smell. That is sweet smell. Next we go to the important physical properties. बहुत important physical properties. That is melting point and boiling point. That is melting point and a boiling point. Okay. The melting point mean here say MP. Nagi. MP melting point. It is not a member of parliament. Member of parliament no. Ye kono? Melting point. Melting point means the temperature at which a solid changes to liquid, and the boiling point mean the temperature at which liquid changes to gas or gaseous form. That is called what? Boiling point and melting point. How it increases? देखो गोटे टेम्परेचर जितने कि सॉलिड स्टेट मेल्टिंग पॉइंट को मीन लिक्विड स्टेट को चेंज हेबो. सॉलिड स्टेट मीन द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड. लिक्विड स्टेट मीन दे आर नॉट क्लोजली पैक्ड, लूजली पैक्ड टू इच अदर. मीन या भितर एट्राक्शन कौन ये मॉलिक्यूल भितर थिबा एट्राक्शन जते लूज हो जिवो सेते बेले ये चेंजेस हम कौन को ब्रेकडाउन हेबनी. ताको भितर थिबा बॉन्ड ब्रेकडाउन हेबनी. इंटरएटॉमिक बॉन्ड रे कौन से चेंजेस आसीबनी. फिजिकल प्रॉपर्टी मीन देयर इज नो न्यू सब्सटेंस फॉर. सेतरे किछि भी न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन हेबनी. जहां भी हेबो ओनली द फिजिकल चेंजेस. That is state change, which means only the intermolecular force. Intermolecular force are called the London force या van der Waals force. London force. तो ये लंडन फोर्स जिते वीक आसीबो सेते से सॉलिड रो लिक्विड यार को जीवो हा कि नहीं. या को भितरे जिते लंडन फोर्स वीक रहइबो सेते तार बॉइलिंग पॉइंट सेते कम रहइबो. मेल्टिंग पॉइंट भी सेते कम रहइबो. बिकॉज एंड गैसियस are totally loosely packed, means there is the force of attraction between the molecules are very negligible. That is in gaseous state. Okay, here a melting point and boiling point are totally depend upon it's a van der Waals force या London force. Okay, when the van der Waals force increases, its melting point also increases. Van der Waals force increases, its melting point and boiling point also increases. Mean London force or van der Waals force are directly proportional to melting point. या melting point and boiling point are directly proportional to London force. Okay, तो या पूछे तो से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये जते बढ़ुतबो फोर्स जते बढ़ुतबो से बॉन्ड को लूज करेबा पई भांगीबा पई लूज करेबा पई सत्य की कौन दरकार अधिक टेम्परेचर दरकार. मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करिवो. मीन व्हेन द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस इन ऑर्गेनिक कंपाउंड इट्स व्हाट van der Waals force also increases. If the van der Waals force increases, then its melting point boiling point increases. If the number of carbon increases its melting point and boiling point increases. Okay, increases. First thing. Second things,
the melting point and boiling point of haloalkane is more than its corresponding hydrocarbon. Means suppose methyl chloride, chloromethane, it's originated from methane by replacing hydrogen or free radical substitution with process of halogenation in presence of UV light or HNO, it will form the chloromethane. So its melting point and boiling point is more than the methane. Suppose ethyl chloride C2H5Cl, its base part is originated from ethane C2H4. Okay, corresponding hydrocarbon means if here is 2 carbon, its hydrocarbon also 2 carbon. Okay, now do not compare the ethyl chloride with the butane. Do not compare with ethyl chloride with butane. कहना से 4 carbon है 2 carbon. तो या कुछ तो तुम्हें comparison आनी बनी. Comparison आनी वो कहाँ से तो तुम्हें same number of carbon थी वो hydrocarbon आओ haloalkane मित्रे. Mean the melting point and boiling point of haloalkane. The melting point and boiling point of haloalkane are the melting point and boiling point of the haloalkane are more than its corresponding hydrocarbon. The melting point and boiling point of the haloalkane are more than the corresponding hydrocarbon. Mean alkane, alkene, alkyne, but the same number of carbon. Means the propene and propyl chloride. Propene means CH3CH, double bond CH2 and CH3CH 2CH2Cl যদি આ ভিতરે કમ્પેર કરું છો એટી બી 3 કાર્બન એટી બી 3 કાર્બન কিন্তু ये গোটা હાઇડ્રોકાર્બન ये গোटे हालो अल्केन दैट्स व्हाई इट्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लेस देन द हालो अल्केन. ओके गोटे हाइड्रोकार्बन गोटे हालो अल्केन रे सेम कार्बन थिबो तेबे जई तमे जदी कंपेयर करूछ तो कार अधिक आसीबो हालो अल्केन रे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अधिक रहबो. क्लियर. Then if the same haloalkanes attached to the माने कौन कार्बन सेम थिबो सबुतरे हालोजन थिबो बट डिफरेंट हालोजन अटैच टू द कार्बन कंपाउंड. सपोज C2H5Cl, C2H5Br, C2H5F mean ethyl chloride, ethyl bromide, ethyl chloride, ethyl iodide, C2H5I. तो या भितरे यदि हमें कंपेयर करूछु या भितरे यदि हमें कंपेयर करूछु हियर इज नंबर ऑफ कार्बन सेम. फर्स्ट पॉइंट वी से दैट इफ नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस इट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस. जार नंबर ऑफ कार्बन अधिक रहइबो तार मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अधिक रहइबो. सेकंड कथा हला यदि हाइड्रोकार्बन अछि आ हालो अल्केन अछि तो हाइड्रोकार्बन रे कम रहइबो हालो अल्केन रे अधिक रहइबो. बड़े ना हाइड्रोकार्बन हालो अल्केन भितरे कंपेयर करे छी ना डिफरेंट कार्बन भितरे कंपेयर करे छी. समस्तकर नंबर ऑफ कार्बन 2 एवं समस्त भी हालो अल्केन अछंती. तो आंको भितरे कार मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट याको भितरे ऑर्डर केमती बहुत इंपोर्टेंट एमती सब देइति ऑर्डर ले C2H5Cl, C2H5F, C2H5Br, C2H5I, C2H5F, C2H5Cl, C2H5Br, C2H5I और C2H5I और C2H5Br और C2H5Cl और C2H5F. Which order are the increasing order of their melting point and a boiling point? अब इतने which order is the correct? के order टा ठीक है according to the melting point boiling point.
कहीं आम गोटे पॉइंट कहीलु जदि कार्बन अधिक रही तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट अधिक हम तो भितर कार्बन सेम अच्छी तो दैट पॉइंट कैन नॉट बी डिसाइड और द डिटरमिन द फैक्टर सेकेंड पॉइंट कही जदि हाइड्रोकार्बन अच्छी हालो अल्केन अच्छी तो हाइड्रोकार्बन कम रहा हालो अल्केन अधिक रहा बट हियर इज ऑल आर द हालो अल्केन सो द बेसिक मीन्स the when the atomic radii increases here is atomic radii increases its van der Waals force या London force also increases ओके जते से लंडन फोर्स इंक्रीज करिवो सेते मेल्टिंग पॉइंट अधिक हो माने जहार एटॉमिक रेडी अधिक थिवो एटॉमिक रेडी कार अधिक फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन when it goes to the top to bottom atomic rate increases so अधिक कारण iodine अधिक so its Ri has more melting point boiling point than RBr then RCl then RF okay this is the important things remember to it and if the same number of carbon and all are the halo alkane then you goes to the iodine to fluorine mean iodine has more melting point boiling point than bromine than chlorine than fluoride so that here is I read that I is the first but the maximum students think that this is the right because here is the decreasing order but the question has to increasing order so this one is the correct को माने रखिए से आई को फास्ट जे पे गले सारा आई लिखते तो आई पहला करी से ऑर्डर बट इट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर सो इट गोइंग टू रिवर्स फ्रॉम फ्लोराइड दिस वन इज द करेक्ट ओके देन फर्स्ट इज नंबर ऑफ कार्बन सेकेंड इज हाइड्रोकार्बन एंड अल्काइल हैलाइड थर्ड वन इज But same but different halogen compare with the same number of carbon with the different halogen then same number of carbon same halogen suppose CH3 CH2 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 Cl CH3 CH2 CH CH3 CH2Cl 1 2 3 4 1 2 3 4 CH3 C CH3 CH3 Cl here you see that both have the 4 carbon and halogen is chloride here is also 4 carbon halogen also chloride here is also 4 carbon halogen also chloride means यदि carbon भी same halogen भी same hydrocarbon halo alkane नहीं तो कौन सी पॉइंट को ये सैटिस्फाई करू नहीं फर्स्ट पॉइंट थला हाइड्रोकार्बन अधिक हेले बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट अधिक बेटे कार्बन समस्त सेम अच्छी सेकेंड थिंग थला कौन हालो अल्केन आउ हाइड्रोकार्बन भितर ऑल आर हालो अल्केन थर्ड थिंग थला सेम नंबर ऑफ कार्बन थिबो बट डिफरेंट हालो अल्केन थिबो देन वी गोस टू आयोडीन टू फ्लोरीन बट हियर इज सेम हालोजेन एलिमेंट्स अटैच्ड टू द कार्बन यदि हालोजेन गुड़िक सेम अच्छा तो ये कौन हम ना इट इंक्रीजेस मीन्स वन पॉइंट टू बी रिमेम्बर व्हेन द नंबर ऑफ ब्रांच इंक्रीजेस its melting point and boiling point decreases इनवर्सली प्रोपोर्शनल ओके जते ब्रांच बढ़ुतबो एटी तो नो ब्रांच दैट इज अ स्ट्रेट चेन व्हेन यू लुक एट द प्रिंसिपल चेन हियर इज 4 कार्बन हियर इज 1 ब्रांच 1 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हियर इज 2 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप व्हेन द ब्रांच इंक्रीजेस इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेस देन इट्स ए मेल्टिंग पॉइंट एंड ए बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस मेल्टिंग पॉइंट एंड ए बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस सो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज मोर suppose it is I, it is 2I, it is 3I, then I has more melting point than 2I, then 3I. Okay, mean when
the branch increases, its melting point and boiling point decreases. When branch increases, its melting point and boiling point decreases. Clear? Then in case of haloarine, that is the most important things. In case of haloarine, haloarine means, suppose orthochlorotoluene, parachlorotoluene, metachloro and parachloro. Okay, its boiling point is approximately equal, not same. पाखापाखि से 2 to 3 degree भितर different अच्छी, 2 to 3 degree भितर different अच्छी, but यार boiling point and melting point are different order, same order रे नहीं, सेठी सब हमें same order रे पढ़ी चललू. This, that's why it is the important, most important things. Okay, यार melting point और boiling point order same नहीं. In case of boiling point, the orthoarine, ortho are more than the more boiling point than the para, then meta. But in case of melting point, the para has the more melting point due to symmetric in structure. Symmetric structure जो कुछ से माने closely packed to each other. कहना ये गुटे धरो suppose मानी नियो ये गुटे काठो बाक्सो बा गुटे क्यूबेड शेप रो then ताप लगेले से closely packed है but it is structure they do not closely packed with each other. Okay, so it has the para is more boiling point than ortho than meta. समस्त अर्थ मेटा कम रे रहबो ऑब्वियसली कि भाई ऑर्थो पारा बॉइलिंग पॉइंट रे ऑर्थो रो अधिक बॉइलिंग पॉइंट बट मेल्टिंग पॉइंट बेले पारा पोजीशन रे अधिक मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू सिमेट्रिक इन स्ट्रक्चर ड्यू टू सिमेट्रिक स्ट्रक्चर ड्यू टू कोन सिमेट्रिक इन स्ट्रक्चर. Okay, this is the exception case. This is the exception case. Chemistry is the full of exception. Chemistry सबुठ अधिक exception और जेटा ही exception सेटा ही importance for the examination. Okay, this is all about the melting point and boiling point. Next we go to solubility. Next we go to solubility. Okay, solubility. Solubility means dissolve in water. Solubility with the water. देखो before going to solubility we discussed the universal law of solution, that is like dissolve like dissolve like. Okay, like dissolve like mean polar dissolve in polar हला non polar dissolve in non polar dissolve in non-polar polar dissolve in polar non-polar dissolve in non-polar. जदि गोटे polar then question arises what is the meaning of polar. Polar रो अर्थ कौन? Polar means the when the covalent bond is formed between the two different electronegative atoms. Suppose A गुटे atom B गुटे atom यार गुटे इलेक्ट्रॉन को शेयर कराई छी and that is the share pair electron को both attracted A also attracted towards itself, B also attracted towards it. एटा joint property. ये भी तार को attraction करिवो ये भी तार को attraction करिवो तो attraction करिबा tendency होचो electronegativity हला जेतरे फ्लोरीन रे सबटो अधिक फ्लोरीन रे अधिक 4.0 then oxygen 3.5 then chlorine nitrogen 3.0 like that and halogen रे भी स्पेशली अधिक रहउची. जदि जनकर more than 3 point अछि जनकर 2 less than 2 अछि कि 2.1 अछि यांको भितर डिफरेंस जदि 1.5 रो अधिक अचला देन से माने पोलर कैरेक्टर शो करिवे कना जहा पाकर अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव अछि शेयर पर इलेक्ट्रॉन को से तार को टाणी नबो तार को कोन करिवो शेयर पर इलेक्ट्रॉन टाणी नले से पार्शियली पॉजिटिव हो जो आ उदले पार्शियली नेगेटिव हो जो दैट इज कॉल्ड पोलर. जदि एमान को भितर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल अछि देन दैट इज कॉल्ड नॉन पोलर. जदि एमान को इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वैल्यू इक्वल अछि से माने इक्वली शेयर पर इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करचंती
मान जॉइंट प्रॉपर्टी को इक्वल अट्रैक्शन करूछंती तो सेटा होची नॉन पोलर किंतु जदि अनइक्वल अट्रैक्शन हला जण पाखरे अधिक फोर्स रहला जण पाखरे कम टेंडेंसी रहला तो टी टाणीला सेटा होची पोलर इन केस ऑफ अल्काइल हैलाइड दिस इज द बेस्ट लॉजिक ओके बहुत ही बढ़िया लॉजिक अछि बहुत बढ़िया क्वेश्चन भी उठे आसे एतरे भी हालो अल्केन कोन हालोजन मीन अल्काइल मीन कार्बन हालोजन मीन क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन तो एमान करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक अछि देन कार्बन टू सो इट इज पोलर वाटर कथा जदि कहमी SOH तो ऑक्सीजन रे इलेक्ट्रोनेगेटिव अधिक अछि हाइड्रोजन तो ये भी पोलर यूनिवर्सल लॉसेस दैट लाइक डिजॉल्व लाइक इन पोलर डिजॉल्व पोलर सो अल्काइल हैलाइड आर पोलर वाटर इज ऑल्सो पोलर सो पोलर डिजॉल्व पोलर तो ये इतरे डिजॉल्व होबा कथा किंतु हबनी केमिस्ट्री इज द फुल ऑफ एक्सेप्शन किंतु हबनी दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हाई माने ऑल्दो अल्काइल हैलाइड इज ए पोलर इन नेचर बट इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर व्हाई ये पोलर वाटर भी पोलर बट इट इज इनसॉल्युबल किंतु लॉ होती पोलर डिजॉल्व पोलर रे पोलर डिजॉल्व हबो बट क्या हमें देखुचे ये पोलर बट इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट व्हाई हैला ये पोलर रही कि भी काहे की इनसॉल्युबल होची दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लॉजिक दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन व्हाई हालो अल्केन आर इनसॉल्युबल इन वाटर ऑल्दो इट इज पोलर इन नेचर जदियो या पाखर पोलर नेचर अछि काहे की इनसॉल्युबल होची दैट इज लॉजिक देखो वाटर another water molecule as it in polar it is partially positive it is partially negative hydrogen is partially positive oxygen is partially negative and it form a weak attraction between the hydrogen and oxygen कहना या पाखर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव या पाखर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव रही यार नेगेटिव चार्ज के आ इलेक्ट्रॉन पेयर को ये टाणी यार इलेक्ट्रॉन पेयर को से टाणी तो यांको भितर वीक अट्रैक्शन गोटे डेवलप होती जेटा कहती हाइड्रोजन बॉन्ड तो यही गोटे वीक अट्रैक्टिव फोर्स अच्छी तो गोटे सब्सटेंस केतेबेले डिजॉल्व करिवो ना जेतेबेले यही बॉन्डटा ब्रेकडाउन हबो केमिति ब्रेकडाउन हबो ना जेतेबेले वाटर गोटे वाटर भितरे आमे जेकोनोसी जिंसो जेकोनोसी सॉल्ट गोटे ऐड करलु बा जहां भी ऐड करूचु सेठी किछि एनर्जी फॉर्मेशन हुए जेटा कहती हाइड्रेशन एनर्जी जो कौन सी जिनस डिजॉल्व कले परे गोटे सॉल्ट डिजॉल्व हैला परे बा डिजॉल्व हैला परे सेठी एनर्जी इवॉल्व हुए दैट एनर्जी इज कॉल्ड हाइड्रेशन एनर्जी एंड दिस एनर्जी हेल्प टू ब्रेक दिस बॉन्ड ए एनर्जी टा या को कौन करिवो ब्रेक करबा पई हेल्प करे तो एठी जो अल्काइल हैलाइड हमें ऐड करिया पड़े जो हाइड्रेशन एनर्जी आसुची दैट हाइड्रेशन एनर्जी कैन नॉट अनेबल टू ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल अरे बाबू दी जन भितर बॉन्ड को भांगिले मु जाई ता भितर पसिबी तांको भितर फ्रेंडशिप हेबी तांको सहित मिलाई जीबी तांको सहित डिजॉल्व हे जीबी जे तांको भितर फ्रेंडशिप को मु भांगी पारुनी त मु तो सेपरेट रहिबी एतरे तो किछि माने नै सेपरेट रहिबी जस्ट लाइक दैट जदि एमान को भितर हाइड्रोजन बॉन्ड को भांगी पारो नाही जदि ये बॉन्ड ब्रेकडाउन हो पारनी तो डिजॉल्व हो पारिबो नहीं तो डिजॉल्व हो पारिबो नहीं फर्स्ट थिंग सेकंड थिंग्स जदि अल्काइल हैलाइड आसी तो आगुटे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करि परतंता इट कैन नॉट आल्सो फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्ड विथ water molecule there is two things for this two reason for the two logic it cannot soluble in water it is unable to break hydrogen bond when the amount of hydrogen energy formed due to the addition of water are unable to the माने याकू वाटर रे ऐड करबा द्वारा जति की एनर्जी आसुचु सी आ भितर थिबा हाइड्रोजन बॉन्ड भांगिबा को कंप्लीटली अनेबल ओके सो दैट इट इज insoluble in water so question will come although alkyl halide
alkyl halide are polar in nature, why it is insoluble in water. Polar in nature, why it is insoluble in nature. First, it cannot form hydrogen bond. It cannot form hydrogen bond with water. ना से फॉर्म कर पारछु ना ताको भीतर थिया हाइड्रोजन बॉन्ड को भांगी पारछि. वाटर और the amount of hydration energy produced by water are unable to break hydrogen bond between the water molecule. Hydrogen bond between the water molecule. Okay. ना से निजे हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन करि पारछु ना हाइड्रोजन बॉन्ड को भांगी पारछु. Okay. This is about the solubility. This is the main characteristics of the physical property. Main physical property. Then you go to density. Okay. Density. Okay. Density means mass by volume. Mass by volume as compared to mass of the compound as compared to volume. Mean chloroalkane heavier than water, lighter than water. There is iodoalkane is the heaviest among all alkane. सब alkane भितरे iodoalkane कौन अच्छी heaviest अच्छी atomic radius अनुसारे among all haloalkane and bromoalkane chloroalkane and the bromoalkane and chloroalkane the heavier than water. So here is Ri reactive density order Ri, then RBr, then Rf, then RCl. Okay. Then bond length. Bond length means depend upon the atomic radii. Ri greater than RBr, then RCl, then Rf. So its bond length also increases from this. Ri, then RBr, then RCl, then Rf, because due to more atomic radii of iodoalkane. Then polar nature. Polar nature means it does depend upon the electronegativity. You know that fluorine has highest electronegativity, so that Rf greater than RCl, greater than RBr, greater than Ri. Okay. Then polar nature. Then dipole movement. What do you mean by dipole movement? Dipole movement means it is the product of the charge between two atoms. Suppose
and B anko vitre suppose it is partially negative, it is partially positive due to more electronegative or polar in nature. तो anko vitre charge either positive charge or negative charge with the distance between two molecules, that is called a dipole moment. That is called a dipole moment. So the dipole moment depend upon the electronegative value also. So Rf also more dipole moment than RCl, then RBr, then Ri. Then inflammability, it is less inflammable than a hydrocarbon, less inflammable than hydrocarbon. But the polyhalides are used as the extinguishers like CCl4 are the more inflammable character. Polyhalide has the more inflammable character. This is all about the physical property. First thing, state mean lower member are in gaseous form, then up to C8 in liquid form, then a solid form. Halo are in both in liquid and a solid form. Then color, it is pure form are colorless, but alkyl bromide and alkyl iodide exposed to, when it exposed to light, it shows the color. Odor, it is generally a sweet smell, means with the compound which is gaseous form, that is a sweet smell. And melting point, boiling point is the most important part of the physical properties. First, number of carbon increases, melting point, boiling point increases. Hydrocarbon and haloalkane, hydrocarbon has less boiling point than the haloalkane. If the both are same carbon but different halogen, then we go from Ri, mean iodine, bromine, chlorine, fluorine. Okay, if the number of branch increases, the boiling point decreases. But in case of haloarine, that is the one different melting point and boiling point. In case of boiling point, the ortho is the more boiling point, then para, then meta. In case of melting point, para is more than ortho, then meta. Okay, then solubility, mean it is insoluble in water, but it is polar in nature, but insoluble in nature, water, due to it cannot form hydrogen bond. It cannot form hydrogen bond, and it cannot form hydrogen bond. It is unable to break the hydrogen bond between the water. Then the density, then bond energy, polar dipole moment, like that. Okay, ये जो physical property बहुत important for short question, for region based question. For region based question it is more important. For order based question तो obviously कौन सी भी entrance तो दिया ना कहीं कि तुम्हें order based question पाइबो ही पाइबो, हैला. तो this is the order based question. So it is the most important part of the haloalkane and haloarenes. Okay, thank you.